We have to again understand a basic formula. So I am coming to that chart again, and I will share another chart. Okay. So if you have any chart without mentioning the name, you can tell me, so that we are going to answer a specific question that will solve our problem of how to solve a particular answer. Okay. Tell me any particular day, any of you. You need to have some charts with you so that we can discuss. And that should be a different chart. Without naming me, you should tell me the date, time, birth, and we will find out a particular answer to a question. So I am giving another chart to you for your understanding. In March 1991. The time is 12:48 a.m. You can note down so that you can go through it. 48 a.m. Place is Bankura, Bangalore. So this is another chart, and we have to find out the marital relationship of the native. First, tell me the factors. सर ये जो एएम किया है ये शायद एएम हुआ नहीं है मुझे लगता है. ये 24 आवर्स वाला फॉर्मेट होगा. हाँ 24 आवर्स वाला फॉर्मेट है. तो 00 करना पड़ेगा ना सर. 0048. ठीक है सर, थैंक यू. So now this is the chart. So tell me, from which house we'll see the effect of, I can say, marriage in a life of the native. Which is that house? 7th house, sir. That house is 7th house. And who is the karak of marital bliss, happiness in marriage? Venus. 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 Now from which house we are going to see the happiness of marriage? 10th house. From the 10th house. Okay. So primarily we are going to find out these three things. Okay. So now see, who is the badhaka in this particular chart? Mercury. Mercury. And who is the Jnati Karak? How we have to know the Jnati Karak? Tell me Venus the is Jnati Karak. Karak. So now go through the degrees and find out the Jnati Karak. Second lowest degree planet. So now see, Saturn.
Venus is 1 degree and 17 minutes, followed by 19 Saturn. Jupiter, 10 degrees. Jupiter and Saturn. Okay. So Saturn is the Gyati Karak. Okay. So now if Saturn is the Gyati Karak, then see the position of Saturn also. Okay. So one by one, we have to find out the things. What about the seventh lord? Mercury. Mercury. Debilitated. So Mercury is debilitated, isn't it? Yes, sir. Okay. Now what about the happiness planet? That is the lord of the 10th. Again, that is also Mercury. Yes, sir. What about the Gyati Karak, the problem making planet? Second house, Rahu Ketu. So that is 8th from the 7th house. Yes, Okay. sir. 8th from the 7th house. And it is also with Rahu. So now you can see that first few factors that we have seen are actually indicating that there is problem in the marriage, isn't it? Yes, sir. Now, positiveness from a marriage is seen from the next house of marriage, that is 8th house. And there is also Ketu. Okay. Even though Jupiter is exalted there, but here Jupiter is the lagna lord and which lord? 10th Lord. Fourth house. Fourth. Fourth Lord. Fourth Lord. Lagna and the 4th lord. Okay. So career wise, this can be good. For learning, this can be good. For kind of, you can say, research, it is good. But so far as marriage is concerned, this is not at all good. No talking, please. Whoever is having the mic on, kindly mute yourself. Who is that? So now that ultimately means the first few things that we have seen are not responding well for the answer. Now we have to compare this with the Navamans chart. Whenever the problem is there and the problem giving planets are having same kind of relationship or a very peculiar relationship in the Navamans chart, then this is not a problem of this life. You are carrying out the problem from the past life. For example, the direct relation. What is the position of Mercury in the Navamans chart? Sixth house, sir. So it is in the 6th house. Again, it is sitting along with the natural lord, which is the Badhak of Mercury, isn't it? Yes. Again, in the chart, Mercury is the 2nd lord and the 5th lord. Okay, 2nd lord and 5th lord, and it is sitting with the 11th lord and the 8th lord. Okay, so now the combination of a 8th lord planet here, and also we have to find out the aspect on Mercury. So who is giving the aspect? Saturn. Saturn. Venus. Saturn and Sir. Venus. Yes, sir. Okay, so now we have to again find out whether this particular Mercury is related to Saturn in terms of Nakshatra lord. Okay, in terms of Nakshatra, we have to find out the position of Mercury and see. So can you simply see the chart and tell me who can be the Nakshatra lord of Mercury? Kritika or Bhavani? Mars. Okay. Mercury Sun. in Saturn, sir. Uttarabad. Yeah, I have told you how to find out that. So this is in Yes, the sir. last degrees of the chart, isn't it? Yes, sir. So each nakshatra is of how many degrees? 13 degree 20 minutes. So if we are going to count only 2 nakshatras. Then the 8th one will be of Saturn and 9th one will be of Mercury, isn't it?
Yes, sir. So now that ultimately means from 4 degree onwards, 3 degree 20 minutes onwards, the ruling planets of Pisces sign are Saturn and Mercury respectively. So here Mercury is related to Saturn, isn't it? Mercury is in the nakshatra of Saturn. Uttara Bhadrapad bhi aise hi, it is the nakshatra of Saturn. And who is the nakshatra lord of Saturn here? Sun. So it is very easy to calculate actually. Saturn is at 10 degree and some minutes. So if you are going to count in 40 degree, there are 3 nakshatras. So the first nakshatra goes to whom? Ketu. Sun. Ketu. Next nakshatra goes to Venus. Venus. Then Third Sun. nakshatra goes to, Sun. and the fourth nakshatra goes to Moon. So Saturn is in the nakshatra of Moon. Moon is the 8th lord. So all these factors, the number of factors you are going to find out, you can find out that yes, some problem is there related to a particular house. And there will be also a problem with respect to job also, because the same planet is the lord of the 10th house here. So remember one relationship, we have to check that. Whenever you are having viprit rajyog in your chart, when it is going to be fulfilled in your lifetime, what is the time when it will be fulfilled? What is viprit rajyog? Anybody who can say? Sixth Lord in eighth house. That means there 12th must Lord. be some kind of relationship between 6th house, 8th house and 12th house. 12th So what house. kind of relationship? 6th lord in 8th, or 8th lord in 6th, 6th lord in 12th, or 12th lord in 6th, 8th lord in 12th, 8th lord in 6th. Okay. So this kind of situation when arises, exchange, there is viprit rajyog. So now you have to remember when this viprit rajyog is going to be fulfilled. Anybody who is having viprit rajyog in your chart? Yes, sir. Yes. So you must remember this formula. Astrology is all about mathematical formulas. So now what is the condition? For viprit rajyog to be fulfilled, that means there must be transformation in your life. You were in a very negative situation, now you are coming out of the negative situation and going to a very good situation, that is viprit rajyog. Falling into a hole, coming out of the hole and climbing the highest pedestrian, viprit rajyog, because it is a rajyog. So now this has to be checked from your arudha lagna. So if your viprit rajyog forming planets are associated with the 3rd and the 6th lord in your arudha lagna, then that is the time for getting the result of that viprit rajyog. Okay. So now see, if we are going to find out here the viprit rajyog in terms of houses only. Suppose somebody is having. So one of the example is, suppose the 6th lord is Venus here and Venus is sitting in the which house? Venus is sitting in the say 8th house or in the 12th house. Now there is a kind of rajyog here which is exchange between Venus and Mars, isn't it? Exchange between the 5th house and the 6th house, that you can see. Mars is also sitting in 6th Mars. lord of Ji, life. sir. Okay. So now we have to check such kind of rajyogs here. Suppose I am asking whether Mercury is having Neech Bhang rajyog or not. Then what is the example? Mercury is having the aspect of Jupiter. Is it Yes, sir. having? And Jupiter is also. Yes, sir. No, Mercury is not having the aspect of Jupiter. Or having?
3, दो 3, चार 6 and 3, Ninth, 9. Yes, aspect. सर ninth. नाइन्थ दृष्टि है हाँ जी Aspect is there. So there is actually the viprit Rajyog. Okay. So now see the position of Mercury in the Navamans chart. It is in the 6th house and in the sign of Libra. If Mercury would have been in the sign of Virgo, again this is a condition of cancellation of Cancellation. Neech Bhang. Again, Neech Bhang Rajyog. This is a combination of Neech Bhang Rajyog. Mercury is sitting with the dispositor of the sign in Navamans chart. This will also help you to get rid of the problem. And here Mercury and Jupiter are together. So many combinations are there. Okay. So now usually when this is the condition, if somebody is saying, sir, I have Viprit Rajyog in my chart, when it will happen? So blindly tell him that in this particular dasa period, you will have a change in your life. There will be transformation because 8th Lord plays a very vital role in Viprit Rajyog. It is associated with so many things indirectly and directly. For example, 8th Lord becomes the 11th with respect to the 6th house. If the 8th Lord is sitting in the 6th, that means it is 11th away from it. If it is sitting in the 12th, it is 5th away from it. These are all very good combinations. 6th Lord coming to the 8th, 311 is the axis involved. So now in that case, we have to understand what is the way to find out the yoga or the dasa when you are likely to jump out of negative situations. The first and foremost requirement is you must have Neech Bhang Rajyog in your chart. Okay. Even 6th Lord in 6th, 12th Lord in 12th, 8th Lord in 8th. That is also an example of Viprit Rajyog. Even if it is not mentioned, Saral Yog, Bimal Yog, such yogs are there, but this is a condition. Viprit Rajyog. So now what you have to do is you have to calculate the arudha lagna. So can you calculate the arudha lagna from this chart? Anybody? 11th हाउस और थर्ड हाउस और 11th साइन जहाँ So now first of all, see that the lagna lord is Jupiter, isn't it? Yes. 8th So it is 8th away. It is 8th away. So count 8 from Jupiter. 3, 3, 6 and 2, 8. Third house. So now who is actually the lagnes of the third house? That is Saturn. arudha lagna. Saturn. Saturn. So Saturn is the lagna. Saturn is the lord of the arudha lagna. Now which is the third house and the sixth house with respect to arudha lagna? Aries. Sixth and Aries, Aries and Cancer. Aries and Cancer. Okay. So now you see the planets which are involved in these houses are actually Venus, Ketu and Jupiter. Okay. How many good planets are there? 2. Venus and Jupiter. Jupiter 2 good planets are there and 1 bad planet. Suppose you are finding out so many good planets, then the result is very good. In the dasa of Venus and Jupiter, you are going to have a lot of material gains. But here there is no Neech Bhang Rajyog. The first condition has to be fulfilled. I am just giving an answer, empirical answer. When 3rd and 6th from the arudha lagna are operating, there is huge chance of your transformation. Okay. So now we will find out from a known chart that how transformation has happened. Okay. So anybody who want to tell the details of their birth chart?
Don't waste time, huh? I will answer the queries thereafter. So from next time, try to find out some informations about your relatives or about anybody, and we'll put there and we'll discuss and we'll find out how astrological sutras are working. Yogesh sir, are you there? योगेश सर, जितेंद्र जी आप बताओ, अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताओ. आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं? Yes, जी sir, सर। सुनाई दे रही। बताओ. चैतन्य सर आप बताओ. यू टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ. साई चैतन्य जी. 18 January 1994. जस्ट ए मिनट. 18 in January 1994. What is the time? 3:05 morning 3:05. 3 hours 5 minutes. And what is the place? Vijayawada. Vijayawada. Is it your chart? Yes sir. Okay. So just tell me one of the year where you have found out drastic change in your life. It can be a positive change or a negative change. Ketu. Don't tell me Ketu, Rahu like that. You tell me the year. I do not remember the year, but this year also fully changed. This 25th. Yes. So I have to check that. So just find out the arudha lagna first, all of you. The arudha lagna. Capricorn. So now the lord of this particular sign Scorpio is Mars. So Mars is in the second house, isn't it? So now again the third house becomes the arudha lagna. So now who is the third lord? Saturn. Saturn. Not Saturn. You have found out the arudha lagna. From arudha lagna you have to count out the third and the sixth house. Mars You and need Moon. to remember the formulas, okay? Country is not required. So from the arudha lagna, that is the sign of Saturn, the third house becomes Pisces and the sixth house becomes that of Mercury. Okay. So now who are the planets associated? Moon is associated directly. And we have to also check whose aspect is falling on this house. Then Mars is having the aspect here and Mars is also having the aspect in the other house. So Mars is very powerful in bringing transformation. So what is the dasa going on, sir? Venus also. So now this is the dasa going on, isn't it? If we are going to click it, this is the Venus dasa. And again, as he is saying, Venus and Venus antardasa. And now Venus, Venus, and you can have Jupiter. Okay, Venus, Venus, and Jupiter. So Venus, Venus, and Jupiter. So Jupiter is the lord of the house concerned. And again, Mercury is also sitting with Venus. So that is why some kind of transformation seen. But if we are going to pinpoint certain events of your life, you will definitely find out the role of the
3rd and the 6th lord. Even you can go to the 11th lord and the 10th lord, because these are the upachaya houses. Okay. So now, who is the lord of the 10th? Venus. Venus. And who is the lord of the 11th? Mercury. Mars. Lord of the 11th is Mars, and Lord of the 10th with respect to the arudha lagna is Venus. So that is why there is transformation. 3, 6, 10 and 11 are the upachaya houses. There will be materialistic gain when these planets are operating. And once you know the right time in your life, the time to change, you can easily do some remedies and get the best result out of it. And this is a very powerful formula. Because if we are going to deeply analyze, then all the planets will be involved. The 3rd lord will be involved. Jupiter is involved. Again, Mercury will be involved. So now you can find out the role of Mercury here. Mars will be involved. So that is why December 24, Mars is operating. Jupiter is operating. Currently, the transformation is going on because this is the 10th lord. And also, Rahu is sitting in the 11th house. So Rahu will also make a role. So that is why he told that good transformation is going on during the period. Sir, Anybody else? lagna mode, sir, here. I have a question, lagna. Prabhaji. D9 Libra lagna. Which is Libra Lagna? D9. D9. D9 is not Libra Lagna. D9 is Scorpio Lagna. प्रभाजी 8 seconds वहाँ पे रह गया था in the time of the कुंडली. Let me check. एक question था यहाँ पे. Why are we looking at everything from the arudha lagna instead of the actual lagna? Because arudha lagna is only a perception of what everybody feels, right? So why are we counting everything from the arudha? Actually, there is one thing called the brand value. अमित जी आप काइंडली म्यूट कर दीजिए अपने आप को. So now actually see, arudha is associated with our status directly. Okay, the perception of people. You may not be very bad, but people are thinking you are a bad person. You may not be very good actually, but people are thinking you are a very good person. Then ultimately, that perception will have a bigger impact on your life. Okay, you cannot Understood. deny Thank you. it. In every person is a social person, whatever we are inside, but usually people misperceive us. They do not know our reality. They have their own perception of finding out ways that this person is this. So you cannot actually avoid the brand value. People will interact with you according to the interpretation they have made, not according to what you are telling or what you are exhibiting. You may be showing very good parts of you, but if somebody is thinking you are not the right person, he will not interact. So that is why the first thing is the brand value is important. And again, that has to be seen from the 3rd, 6th, 10th and 11th house. Why? Because these are the upachaya houses. With time, the contribution of these houses increases. Upachaya means you are charging the battery. They will go on charging themselves to the 100% as your life progresses. So when good planets are occupying this, you will have a lot of material gains. When bad planets are occupying, you may have material gains with your own effort, but there will be health issues. When there are a combination of planets, then accordingly, you will have mixed results. This is the basic principle of actually astrology. Suppose somebody is asking what will happen in the Venus Dasa. We are discussing the chart, Venus Dasa is going on. To find out the position of Venus here in the chart,
It's in the 10th house by lagna. It's the 10th sign by lagna. 10 sign. And it is in the third house, isn't it? Ji. It is in the third house. Now, Venus is the lord of which houses? 7 and 12th 12. and From the lagna, Venus is the lord of the 7th house and the 12th house, isn't it? Ji. Ji. It is the lord of the 7th house and the 12th house. Do you think it is a good planet so far as the lordship is concerned? 7th house, it might be good, but there's Ketu sitting in it, and it gets exalted in the house-wise by the 12th. So it is not a bad position both ways. But accordingly, these two houses are not very good. Which are the best houses in the chart? 1, 10, 5. 1, 5 9. and 9 are the best houses. 1, 5 and 9. Followed by the square houses 1, 4, 7 and 10. Okay, 10 is the best square house. Trine house are always better than the square houses. So 1 is always the best. 1, 5 and 9. There may be a very small difference in their auspiciousness, but lagna should be very strong. Then only you are going to get good results with respect to a good lagna position. So now can you tell me the strength of lagna in this chart? It's quite powerful because the lagna lord goes into the second from the lagna house, and it's glowing close to its exaltation. Okay, it is going close to the exaltation. It is in a fire sign and the dispositor of the Lord is Jupiter. Okay, dispositor of the Lord is Jupiter. Jupiter is also 11th from that particular house. Okay, so such natives actually can do very good with foreign association or also by involving themselves in some kind of Jupiter characteristics, pursuing higher knowledge, involving in kind of puja, rituals, or you can say astrology or even dharmic celebrations. So now Venus, Also, Rahu is in the lagna, so foreign association will also be added. that is a requirement here, but Rahu is not in a very powerful position. It is in a bad position. Okay, Rahu is always good in the second sign and in the third sign and also in the sign of Virgo. 2, 3 and 6 are the signs where Rahu is good. In the opposite, Ketu is good. So Ketu is good in Sagittarius, Ketu is good in Scorpio, Ketu is good in Pisces. So now when certain planets are actually associated with the lord of the house, they are going to actually influence the house. So 12th house is not at all good. 7th house is a Maraka house, it is also not good. So Venus is not the lord of good houses. Okay, you have to find out whether there is some kind of relationship between the lord with auspicious houses in terms of nakshatra. Can you tell me the nakshatra of Venus here? Anybody who can tell? Sun, Uttarashad. Who is the lord of that nakshatra? So always remember the formula. 1, 2, 3 and 4. These are the 4 signs. There must be how many nakshatras? 9 nakshatras, isn't it? 120 degree. In 40 degree there are 3 nakshatras. So in 120 degree there are 9 nakshatras. So you have to always count like this. 1, 2, 3, 4 are one pair. 5, 6, 7, 8 are one pair. 9, 10, 11, 12 are another pair. So from 9 again, the same kind of nakshatra will start. Who will be the first lord of the 9th house? Ketu, Nakshatra lord? Ketu. Second, Venus. Venus. Third, Sun. Sun. So now we can find out that Venus is in the sign of Sun. Nakshatra of Venus is Star of Sun. Sun. Oh, Isn't it? Yes. So 26 degree, 40 minutes, thereafter 13 degree, up to 40 degree. So
if Venus would have been placed anywhere less than 10 degree in the sign, then the nakshatra would have been Sun. So Sun is the nakshatra lord, and Sun is not a good planet for Venus, and it is sitting along with it. And how many degrees are the difference between Sun and Venus? 0. So now very closely combined. So now relationship issues will definitely be there in the chart of the native. Okay. May not be marriage the product of this chart, or there will be very bad relationship with the spouse. Would you like to throw some light, Chaitanya sir? Unmarried, sir. Okay, what is your age? 30. So now this is how things are going to happen. Okay, Ketu is there in the 7th house also, and the dispositor of Ketu itself is Venus. Venus is closely conjunct, combust with Sun. Mercury is combust, but Mercury is having a bigger degree difference. Okay. So now when good planets are actually combust, they give relationship issues. Issues related to living characteristic. I have told many a times. Bad planets, when they are conjunct, they give problems in life, materialistic problems, and also problems related to some kind of injury to body. But relationship will be hampered only when good planets like Venus, Mercury, Jupiter, they are conjunct to Sun. So you have to check like this. If Mars is conjunct, ask the native about the relationship with younger brother. If Mercury is conjunct, ask the relationship of the native with his daughters. If Venus is conjunct, spouse and partner. If Jupiter is conjunct, with guru, with father. Okay. If Saturn is conjunct with the elder brother. So now this is how you are going to find out. Any question? किसी को पूछना है, हिंदी में ही पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है. सर अगर वीनस रेट्रोग्रेड हो और सन के साथ कंजंक्ट हो तो रेट्रो प्लैनेट का एनर्जी हमेशा बढ़ जाता है. ठीक है. रेट्रो मीन्स इट इज लाइक एन एरो व्हिच हैज बीन पुल्ड बैकवर्ड, यानी टारगेट पे पूरा ओरिएंटेड हुआ, पूरा एनर्जी लगा दिए उसको आगे थ्रो करने के लिए, इन यू आर गोइंग बैकवर्ड फॉर ए रीजन. रेट्रो प्लैनेट. लेकिन रेट्रो प्लैनेट का काम है कि वो हर चीज को 3 बार में सिखाता है. आपके लाइफ में उस तरीके का इवेंट 2-3 बार होगा. विनस रेट्रो होगा, रिलेशनशिप का इश्यूज का बात आ रहा है तो एक रिलेशनशिप नहीं, 2-3 मेजर रिलेशनशिप आपके लाइफ में सफर करेंगे. उसके बाद जाके आप रिलेशनशिप का वैल्यू समझोगे. कई बार क्या होगा, उसको समझते समझते टाइम हो जाएगा. जैसे आपका जुपिटर रेट्रो है, जुपिटर हायर एजुकेशन का कारक है, जुपिटर संतान का भी कारक है, और वो रेट्रो है. मिसकैरेज का इशू हो सकता है. कोई हायर एजुकेशन करने के टाइम में आपको डिग्री मिलने में डिले हो सकता है. बात समझ रहे हैं. सैटर्न रेट्रो है, आपने बहुत मेहनत किए हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको 2-3 बार फेल्योर के बाद मिलेगा, फिर भी आप पीछे नहीं हटोगे, आप और कोशिश करोगे. रेट्रो मीन्स अगेन एंड अगेन कमिंग बैक टू फाइट फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट. तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके साथ उसमें जो है डिले भी होता है. उसमें जो है आपको बार बार चेष्टा करना पड़ता है, क्योंकि इसको चेष्टा वाली प्लैनेट कहते हैं. यस सर. ठीक है. तो आपको ये देखना है, उस प्लैनेट से रिलेटेड 2-3 नेगेटिव इवेंट्स आपके साथ होगा ही होगा. थैंक यू सर. जितना जल्दी आप उनका रिमेडीज करेंगे, उस एनर्जी को यूज करेंगे,
तो 2-3 इवेंट जल्दी जल्दी हो जाए, बहुत ही बढ़िया। कई बार 7 नंबर घर में कोई प्लैनेट रेट्रो होके बैठता है, तो मैं रिमेडी में यही बताता हूँ, कोशिश करो जो भी रिलेशनशिप मैरिज के लिए आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको थोड़ा सा एक लेवल तक जाने के बाद ना खुद ही कैंसिल कर दो, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कर दो कैंसिल, बता दो नहीं जी इस साल हमारा बच्ची जो है ना वो पढ़ाई करेगी, वो आपके लिए भी रिमेडी है। बहुत एंड स्टेज पे करना नहीं है, वो दोनों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन शुरू में आप कर सकते हो। रेट्रो है, 9th में बैठा हुआ है, तो आपको जो है एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा प्लान करना है, तो आप क्या करोगे, पिलग्रिमेज वगैरह करना शुरू कर दोगे। 9th हाउस फादर का होता है, तो फादर के लिए कोई पर्टिकुलर काम जो है 2-3 बार आप करोगे। 9th हाउस गुरु का होता है, अपने गुरु को कोई गिफ्ट वगैरह देना है 2-3 बार दे दो, रिपीट कर लो उस काम को, आपका एनर्जी को उसमें यूज कर लो, थैंक यू। पॉजिटिव हो जाएगा वो रेट्रो प्लैनेट का एनर्जी। ठीक है। कॉम्बस्ट है, कॉम्बस्ट है का मतलब वो रिलेशनशिप सफर करेगा, तो उसमें आप क्या करोगे, उस प्लैनेट को जीवदान देना है, जीवन देना है, एक तरीके से प्लैनेट को जीवन देना। लोग हंसेंगे, मरकरी को कैसे जीवन दोगे, है ना। जीवन देने का अर्थ ऐसा है कि जैसे मानो किसी को स्पीच इंप्रूवमेंट कराने में आपने हेल्प किया, तो वो जीवन दान है। स्पीच, कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है, आपने बोलना सिखाया। कोई बच्ची है वो अपना प्रॉब्लम को बता नहीं पा रहा है, उसको आपने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया। मार्स, मार्स फाइटिंग है, मार्स आर्गुमेंट्स है, मार्स जो है एनर्जी है, दूसरे के लिए एनर्जी बनना, दूसरे के लिए लड़ाई करना। किसी के साथ जास्ती हो रहा है, आप बीच में इंटरफियर कर रहे हो, है ना। मार्स रेट्रो होगा, कंबस्ट होगा, अच्छा होगा। मार्स लिटिगेशन से जुड़ा हुआ प्लैनेट है, सैटर्न लिटिगेशन से जुड़ा हुआ प्लैनेट है। आप देखिए कोई गरीब आदमी बिना बात के जेल में सड़ रहा है, आपने उसका बेल करा दिया, तो आप उसका कंबशन का एक्चुअल में इलाज कर रहे हो, उसके प्रोडक्ट का दान दे दिया आपने, बहुत ही बढ़िया। हर प्लैनेट का कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको उसका लिस्ट बनाना है। जब वो कंबस्ट है तो नेगेटिव है, जब वो बाधक है तो नेगेटिव है, जब वो ज्ञाति कारक है तो नेगेटिव है, जब वो 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो भी नेगेटिव है। तो थोड़ा थोड़ा उसका दान करना शुरू कर दीजिए, नेगेटिविटी कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर, थैंक यू सर। रेट्रो वो रिपीट करता है, उसमें एनर्जी बहुत है, उसका एनर्जी को यूटिलाइज करिए, उस हाउस में यूटिलाइज करिए। जुपिटर रेट्रो है, तो आप पढ़िए, एस्ट्रोलॉजी सीखिए, नया ज्ञान हासिल करिए, कुछ ज्ञान की बातें बताइए, कहीं पे ज्ञान की बातें एक्सप्लेन कर दीजिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक अच्छे तरीके से उसको समझाने का कोशिश करिए, आपका जुपिटर रेट्रो का पावर बढ़ जाएगा। शनि रेट्रो है, जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करिए। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बार बार बताता हूँ, शनि 10th हाउस में है, तो आपके वर्क प्लेस में सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। शनि 4th में है, माँ के लिए सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। शनि 7th में है, स्पाउस के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है। शनि 11th में है, दोस्तों के लिए, बड़े भाई के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है। शनि मंगल के साइन में है, छोटे भाई के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है। शनि मरकरी के साइन में है, डॉटर्स के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। शनि वीनस के साथ है, स्पाउस के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मून के साथ है, मदर के लिए है, सन के लिए है, पितरुओं के लिए, फादर के लिए है। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करिए, बहुत ही बढ़िया है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और जब वो प्यूरिफाई हो जाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हर प्लैनेट अच्छा है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। बुध अच्छा होगा तो आपका वाणी सुंदर होगा, बुध अच्छा होगा तो आप किसी को भी बड़े आराम से कन्विंस कर सकते हो। राहु अच्छा होगा तो आपका रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, डिप्लोमेसी बहुत आराम से आपको आएगा। सूर्य अच्छा होगा तो जहां पे भी जाओगे आपका तारीफ होगा, आपको लोग रेस्पेक्ट करेंगे। शनि अच्छा है तो आप सिंसियर होंगे, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे, कोई काम को अधूरा नहीं रखोगे। वीनस अच्छा होगा तो लेडीज आपको बहुत लाइक करेंगे। हर प्लैनेट अच्छा होगा तो उसका बेसिक नेचर सबसे पहले दिखाई देगा, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है ना। सेकंड का लॉर्ड आपका अच्छा है, बढ़िया स्थिति में बैठा हुआ है,
159 में ट्राइन में बैठा हुआ है, ट्राइन के लॉर्ड उसको देख रहे हैं, अच्छे प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं, तो आपका फेस डेफिनेटली सुंदर होगा, क्योंकि सेकंड हाउस फेस है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए हार्ट अटैक देखा जाता है। फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड होना, राहु केतु का असर पड़ जाना, सूर्य जाके राहु केतु के साथ बैठ जाना, फिफ्थ लॉर्ड जाके 6, 8, 12 में बैठ जाना, तो समझ जाओ कि आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी हाउस कौन सा है? फिफ्थ हाउस। उसका लॉर्ड का एफ्लिक्ट होना। एफ्लिक्ट कौन करते हैं? नेगेटिव प्लैनेट्स, शनि, मंगल, राहु और केतु। शनि तो एफ्लिक्ट करता ही करता है, दुख का कारक शनि है। किसी भी चीज को लेके दुख जानना है तो शनि का भी पोजीशन देखना चाहिए। प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा या नहीं, तो आपका शनि फोर्थ हाउस में होगा, शनि फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ होगा, शनि जो है फोर्थ से फोर्थ में होगा। आर यू गेटिंग इट? सिंपल है। जीवन में हर चीज का आंसर पाने के लिए कई तरीके होते हैं। पहले प्लैनेट का सडबल देख लो, तो ये सारे 10 फैक्टर आपने नोट कर लेना है। सडबल से प्लैनेट का स्ट्रेंथ पता चलेगा, और स्ट्रॉन्ग जो है नेगेटिव इंसान भी हो सकता है और पॉजिटिव इंसान भी हो सकता है। सिक्स्थ लॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लोन लेके आप हमेशा जीत जाओगे, शत्रुओं के ऊपर जीत जाओगे, लेकिन बीमारी, लोन, ये वाला प्रॉब्लम आपके लाइफ में होगा ही होगा। छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं होंगे, बड़े चैलेंजेस होंगे। जीतना बात की बात है, यू हैव टू फाइट फॉर दैट। तो सडबल आपको देखना है, पॉजिटिव सडबल है या नेगेटिव सडबल है। उसका रैंक चाहे जितना अच्छा हो, उसको देखना है कौन से हाउस में ऑपरेट कर रहा है वो। तो सडबल आपको देखना है। जिस हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, उसमें उस प्लैनेट ने कितना बिंदु दे रखा है, अष्टक वर्ग में देखना है, भाव में भी देखना है, और उस साइन में भी देखना है। अष्टक वर्ग अच्छे पॉइंट है, 5 से ऊपर है तो बहुत ही बढ़िया, 5 से कम है तो उसके लिए नुकसान आपके लिए होगा। उसके बाद कहीं वो त्रिक का तो स्वामी नहीं है, 6, 8, 12 का स्वामी तो नहीं है, कहीं बाधक के साथ तो रिलेटेड नहीं है, कहीं ज्ञाति कारक के साथ तो रिलेटेड नहीं है, कहीं ऐसे 2 हाउसेस का स्वामी है जो खराब है, कहीं ऐसे प्लैनेट्स उसके साथ बैठे हुए जो खराब हाउस के स्वामी है। 10-12 फैक्टर चेक कर लीजिए, आप किसी का भी आंसर कर सकते हो। सिर्फ उन्हीं का आंसर आप नहीं कर सकते जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ऐसे कर्म करके अपने चार्ट के ही एनर्जी को मॉडिफाई कर दिए हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, 5% लोग मिलेंगे जो अपने चार्ट के एनर्जी को दे मॉडिफाई। देन ओनली यू विल हैव सम काइंड ऑफ फेल्योर इन योर प्रेडिक्शन। रेस्ट सबके लिए प्रेडिक्शन सही होगा। So you have to go through these things. So tell me, which planet will give the result of the first house here in this chart? Rahu. Rahu, because the planet sitting in the sign will give the biggest result. Who is the nakshatra lord of Rahu? Saturn. Now you have to again calculate. This is the 8th sign, end of another pair of sign. 1, 2, 3, 4 is one pair, 3, 5, 6, 7, 8 is another pair. So the last nakshatra of this is again Mercury, and the last but one is Saturn. So the nakshatra lord of Rahu is Saturn. If it is in 6 degree up to, you can say 26 degree 40 minutes, you have to minus. Okay. So accordingly, we will find out. So now the first is up to, you can say, this is 30 degree, 30 degree, 60 degree, then 90 degree, 96 degree. So 80 degree, then 6, then up to 93 degree, that is 7th and 8th. Saturn is the lord of the sign. Saturn is the Jnati Karak also. Okay. Who is the Jnati Karak here? Have you found out? Sun is 3 degree and Venus. Venus is 3 degree 59 minutes. Okay. So now Venus is the Jnati Karak. It is associated with the sun. Who is the Badhak here? Moon. Badhak is moon. Financial problem is there. Okay. 5th house related problems. You will try to learn a lot of skills, but you will not succeed in learning in a very easy manner. There will always be difficulty. Okay.
because it is the higher education lord also. Even though it is sitting in a very good position, there is a good combination, but the lord of the real higher education is Jupiter. It is having 6-8 relationship with Jupiter. Saturn is very near to the moon, and next to moon Ketu is there, so Ketu is slowly coming towards moon. Not a very good combination for moon. Okay, so you have to check like this, you will get the answer. Anybody who want to ask another question? सर एक क्वेश्चन है, जैसे लग्न में रेट्रो जुपिटर है, तो ऐसा कई बार फेसबुक पे पोस्ट पे और कई जगह पढ़ा है, तो ऐसे आदमी को जो सक्सेस मिलता है वो जन्म स्थान से काफी दूर जाके मिलता है, क्या ये सही है? सक्सेस कहां से देखते हैं? हाँ जी, सक्सेस इज सीन फ्रॉम द 10th हाउस। 10th house. हाँ जी सर। इसका फ्रूट कहां से देखते हैं? 4th फ्रॉम द 10th, फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो रेट्रो जुपिटर का क्या मतलब हो गया? यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एनर्जी, रेट्रो जुपिटर, विजडम, lot of experience, but after 4 or 5 failures then only you will utilize your experience. बहुत ही बढ़िया बात है कि जुपिटर जिसका भी महादशा में है, उसने अगर अपने पास्ट कर्मों से गलती क्या है जान लिया है और उसके पास उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक्चुअल में पावर है। हाँ जी, मैं ये गलत किया हूँ। यूजुअली जुपिटर वाले गलती नहीं मानते हैं, उन्हें लगता है उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। रेट्रो जुपिटर तो बहुत ही डिफिकल्ट है ना, तो बीवेयर ऑफ दैट, क्योंकि आपका जो जुपिटर एक्सल्टेड होता है वो 4th साइन में होता है। ठीक है, एंड 10th इज 10th फ्रॉम दैट, कर्मा एसोसिएटेड है, आपके कर्मा को ठीक करना होगा। और जब आपका 10th एसोसिएटेड होता है तो जुपिटर नीच का होता है, इसीलिए जन्म स्थान को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। रेट्रो जुपिटर लगन में हो तो अवे फ्रॉम द बर्थ प्लेस होता है। ठीक है, 10th वाला रिलेशन आ गया। शनि छुपा हुआ है, शनि आपको रहने नहीं देगा, और अगर शनि का एस्पेक्ट 4th हाउस में रह गया तो आपको तो जन्म स्थान से दूर जाना ही जाना है। ठीक है, ओके, अगर वो पर्सन ना जा पाए जन्म स्थान से दूर, मतलब जो उसका जितना भी काम वगैरह है वो जन्म स्थान के मतलब पास में ही है, और जन्म स्थान से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे ही वो रह रहा है जैसे, तो फिर इस केस में कुछ इसका इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जा सकता है? अब जब 40-50 किलोमीटर में रेक्टिफाई किया जा सकता है तो 4-5 किलोमीटर में, 400-500 मीटर में भी रेक्टिफाई किया जा सकता है ना। नहीं नहीं, जैसे साइंस जैसे से डेवलप करेगा अमित जी, हाँ हाँ, बहुत बड़ा डिस्टेंस भी छोटा डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो आज के डेट में वो 40 किलोमीटर वाला फंडा एप्लीकेबल नहीं है। ओके, आज के डेट में 40 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। छोटा मोटा सही बात। रिमेडी हम कर सकते हैं, लेकिन रिमेडी खाली एक जगह से होता नहीं है। कई बार हम्म, सैटर्न भी आपके कर्म के लिए रिमेडी बताता है ना, हाँ जी हाँ जी, सैटर्न। तो आपको एक चार्ट से सारा डिटेल्स देखना है। ओके सिंगल प्लैनेट और सिंगल पोजीशन विल नेवर डिसाइड योर फेट, ओके दे सर, शुड बी ऑलवेज इन लेयर्स, है ना। कर्म खराब है तो शनि बताएगा, बिजनेस खराब है तो मरकरी बताएगा, रिलेशनशिप खराब है तो विनस बताएगा, लेकिन उसके अलावा 7th हाउस भी बताएगा, 12th हाउस भी ओके बताएगा, 10th भी बताएगा, 10th फ्रॉम 10th भी बताएगा। तो आपको हर लेयर पे देखना है, जहां पे आपको उससे मुक्ति मिलने का उपाय मिले आप वहां पे जाओ। जैसे मैं कहता हूं कि किसी का भी जो है लियो साइन 10th में पड़ा है, दैट पर्सन विल डेफिनेटली प्रोग्रेस इन द कैपिटल सिटी। लियो साइन 10th में, उसको हाँ आपने जॉब जो बताया है था। करना चाहिए अपने कैपिटल सिटी में, है ना। तो मैं एस्ट्रोलॉजी जानने के बाद में देखा कि शनि मेरा जो है 10th साइन में है ना। तो ऐसे ही मानिए किसी का लियो जो है 5th 9th साइन में है, तो हायर एजुकेशन उसको कहाँ पे करना चाहिए? कैपिटल सिटी में, है ना। किसी का जो है लियो साइन 12th साइन में है तो फॉरेन में जाके कहाँ पे रहना चाहिए?
कैपिटल सिटी में। किसी का पर्सनालिटी का लॉर्ड सन है और लियो साइन भी उसके लगन में है, तो उस इंसान को एक्चुअल में स्टेटस कहाँ पे मिलेगा? किसी कैपिटल सिटी में, है ना? तो ऐसे ही आप देख लीजिए आपका लियो साइन कहाँ पे है। अपने बच्चों के लिए वो लियो साइन कहाँ पे, जैसे किसी का फर्स्ट चाइल्ड है और आपने लियो कैलकुलेट किया तो पता चला 5 6 7 8 9 10, सिक्स्थ एवे हो गया लियो का साइन, और वो मेडिकल में जाना चाहती है, लॉ में जाना चाहती है, तो कौन सा जगह अच्छा होगा? अगेन कैपिटल सिटी। तो सिक्स्थ को यूज कर रहे हो आप, है ना? कोई फॉरेन कंट्री जाना चाहता है, आपने कैलकुलेट कर लिया, 12th लॉर्ड देख रहे हो, तो आप उसके एसोसिएशन में देखिए क्या रिलेशनशिप है। तो राजगद्दी को रिप्रेजेंट करता है। आज मैंने एक चार्ट, एक जो है पोस्ट शेयर किया है, कौन से प्रोफेशन के लिए कौन सा प्लैनेट आपको हेल्प करता है। उस प्लैनेट का स्ट्रेंथ मानो आपके D1 चार्ट में नहीं है, तो फिर आप उसके लिए रिमेडी करिए, साथ में D9 में जाइए। भाग्य को बढ़ाना है, D9 पे जाइए। कर्म को बढ़ाना है, D10 पे जाइए, है ना? व्हीकल्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए अलग अलग वर्ग का चार्ट है। पहले अपने D1 चार्ट के साथ देखिए कि आपका वो लाइफ का इवेंट जो है मैच कर रहे हैं कि नहीं। लाइफ के इवेंट मैच करना चाहिए। यूजुअली जब आपके कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा एंटर करता है तब लाइफ के इवेंट्स होते हैं, ठीक है? तो आपको कैलकुलेट करना है, जहाँ पे 8 दिन 6 दिन का डिफरेंस है, आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड पीछे करके जाके उस इवेंट तक ला सकते हो। जैसे किसी का मैरिज हुआ है तो उस डेट पे आप देख लो दशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड कौन है, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, वो प्लानेट दिख रहे हैं कि नहीं, आपके 7th हाउस में है या 7th को देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। आप ना कोई एक इवेंट को लेकर टाइम को देखिए और उसको स्टडी करिए, थोड़ा सा ठीक कर देंगे तो आप फिर बर्गा चार्ट भी आराम से यूज कर पाएंगे। ओके, Thank you so much. so one last Okay. question, if you want to ask you can ask, otherwise I will stop the class here. So I hope there is no further question. If there is, you can share in the WhatsApp group, I will answer. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.